Yeah. So today we are beginning with the topic called as dipole moment. And in this topic, right, so dipole, here you are able to analyze the thing that dipole means there are two poles, correct? क्या लिखा है यहाँ पर? पोल लिखा है, पोल। एंड कितने पोल? वो है डायपोल। डायपोल मतलब कितने पोल हो गए ना? दो पोल, करेक्ट। तो डायपोल का क्या करना है हमको? उसमें मोमेंट आ गया है अभी, है ना? देयर हैज कम अ मोमेंट। नाउ व्हाट इज दिस मोमेंट? एम आई टॉकिंग अबाउट मोमेंट वाला टाइम? ओ, वन मोमेंट, करेक्ट, 1 minute। एम आई टॉकिंग अबाउट दैट मोमेंट, है ना? Right? What is this moment and what is this dipole? Correct? All these things will get clarified, my dear student, from this topic today. Right? Today, everything will get clarified. Just like now, see, so dipole means वहां पर आपको कम से कम दो पोल तो चाहिए। पोल मतलब खंबे नहीं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी के खंबे। तो बोलेगा पोल मतलब क्या? खंबा। वो वाला खंबा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वाला भी खंबा नहीं, है ना? Correct. It is about relating to polarity. Polarity means where there is imbalance in the charges. Correct. Just like dipole could be your north pole, south pole. दो पोल आ गए, क्या लें उसको? डायपोल। डायपोल could be positive, negative. It's a dipole. Dipole in the sense of the charge. Correct or no? Right. So if I am saying about dipole, what comes to our mind is that there should be two poles, and let's have a look and analyze how it comes by just by a simple example. When H3, suppose if I have this structure of NH3, so does anyone know? We have studied it for a long time. Does anyone know what is the structure of NH3? हमने बहुत बार देखा भी है इसको। Yes or no? We have seen it a lot of time as well. Right? What is the structure of NH3? Yes, tell me. NH3 का स्ट्रक्चर क्या है? हाँ, यस रुद्राक्ष। टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल उसका ये है, sp3 तो है उसका, हाइब्रिड है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? टेट्राहेड्रल है CH4 का। इसमें क्या है बेटा? एक लोन पेयर आ गया। तो एक लोन पेयर आने के बाद क्या कंडीशन होता है? उसके लिए क्या हमने देखा था? व्हाट इज दैट यू वांट टू नो? बोलो। गेटिंग माय पॉइंट ना? आई एम आस्किंग दैट व्हाट इफ व्हेन इट इज राइट टेट्राहेड्रल? Correct? Like that I am asking. Understanding point, no? Yeah, please. Okay, Irish, tell me. What's Irish? What is the structure of NH3? Very common, बच्चों वाला क्वेश्चन। मेरे 9th स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी इसका आंसर दे देंगे, उनको भी पता है NH3 का स्ट्रक्चर क्या है। बोलो, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ने वाला इसके खिलाफ। What is the structure of NH3? Very common. We have seen it in your textbook. It's there in your notes also. बोलो। Yes, Mrs. Riya, tell me, what is NH3 structure? Yes, Mrs. Riya Parate, tell me, what is structure of NH3? It's not a very difficult question, correct now, to answer.
Pyramidal. Okay, what kind of pyramidal is it? It's a Trigonal pyramid. very good. The structure is trigonal pyramidal, even though it is sp3 hybridized. But there is one lone pair. One lone pair, what it does is that it reduces the bond angle. So what it does is that it will reduce the bond angle, correct? That's why when one lone pair is there, the bond angle reduces by 2.5 degrees. You know? From 109 degrees, 28 minutes, it turns back, correct? And it reduces its angle leading to 106.7, right? Now, that's how it happens. Now, the structure which you are able to see, what all things you can understand is that this could be, right? Now, this lone pair electrons, they are pulling the electrons. Electron है तो क्या करेंगे? Pull करेंगे. तो dipole moment क्या दर्शाता है? तो dipole moment tells the direction of the electrons. Correct? What dipole moment does is that dipole moment will tell us the where are the direction of the electron heading, right? तो क्या करूँगा इसको सिंपल किसी तरीके से मैं क्या करूँगा इसको करेक्ट यस और नो करेक्ट ये एन और लोन पेयर में क्या कर रहे हैं लोन पेयर का डायरेक्शन ऊपर खींच रहा है वो लोन पेयर एंड देन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का डायरेक्शन कहाँ पे है between nitrogen and hydrogen, nitrogen is more electronegative. Understanding point. Nitrogen is more electronegative than hydrogen. That's why what is happening is that they are pulling the electron towards itself. Getting points. This also is a pull towards the nitrogen from hydrogen. And here also electrons are getting pulled from where? From nitrogen to hydrogen. करेक्ट सो यू सी एक एरो तो ऊपर ही जा रहा है ये लोन पर ऊपर ही डायरेक्शन है उसका और ये सबका डायरेक्शन ऊपर है सो द नेट डायरेक्शन वेयर इट इज सो यू कैन क्लियरली सी दैट द नेट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन करेक्ट सो वेयर इज नेट डायपोल मोमेंट नेट डायपोल मोमेंट इज वेयर नेट डायपोल मोमेंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन करेक्ट ना ऊपर सारे ऊपर ही जा रहे हैं नेट भी कहाँ रहेगा ऊपर ही रहेगा गेटिंग माय पॉइंट ना लाइक दैट या नाउ इफ आई हैव द स्ट्रक्चर ऑफ NF3 ये तो है आपका क्या NH3 अब यदि हम लोग बात करेंगे NF3 का ये N है और ये F है करेक्ट where is the pull up the electrons pull up the electrons right this is to of course is pulling on top लोन पेयर का डायरेक्शन तो ऊपर ही है करेक्ट लेकिन my dear friends fluorine is having a more pull fluorine is more electronegative than the nitrogen and that's why what fluorine does is that fluorine pulls electrons from nitrogen towards itself correct here also what will happen fluorine is more electronegative than nitrogen that's why fluorine what it will do fluorine being more electronegative than nitrogen will pull the electrons from nitrogen towards itself and ultimately another F is present with you and what it will do is that it will again pull the electrons from nitrogen because it is more electronegative. More electronegative means it can pull others electron towards itself. My dear students, getting a point. Now you have to tell me where is the net. Correct? Where is the net dipole moment? यहाँ पर आपने देखा ऊपर है नेट डायपोल मोमेंट इसमें बताना है आपको करेक्ट बताओ सोचो थोड़ा सा I'll give you 20 seconds to think where is the net dipole moment tell me quickly I just said it बताओ जल्दी कहाँ है
इसको जस्ट मैं लगा देता हूँ, प्लग इन कर देता हूँ, ठीक है। आया किसी को? आया बेटा इसका आंसर किसी को? No one got it? बताओ कोई तो। No one knows, huh? कोई तो बताओ कुछ तो। ठीक है, तो ऑफ कोर्स फ्रॉम हियर वी आर एबल टू सी दैट कि फ्लोरीन खींच ही रहा है इलेक्ट्रॉन को, फ्लोरीन बहुत ताकतवर है, इसलिए फ्लो कहाँ पर रहेगा? द फ्लो वुड बी फॉर श्योर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ओनली। वेयर वुड बी द नेट फ्लो? द नेट फ्लो वुड बी फॉर श्योर इन वेयर, in the downward direction, right? Very good. अब आगे बढ़ा जाए। मैं क्या बोल रहा था, कहाँ हो रहा था? The pen go. Where's the pen? बच्चों, पेन कहाँ गया? आप लोगों ने तो नहीं लिया ना? नहीं पर तो था अभी। हाँ नहीं है पेन। अचानक से कहाँ गायब हो गया पेन? ओके गॉट इट। ठीक है, आप लोग बोले क्या सर क्या चल रहा है? So what is this dipole moment? You know, right? What is dipole moment? Right? Dipole moment is the percentage ionic character. तो किसको दर्शा रहा है ये ionic character को? And mainly we'll talk about now percentage, right? Ionic character. Where in a covalent compound, right? इसमें वो भी किसमें लिखना है हमको? In a covalent compound, correct? Right, in a covalent compound. Dipole moment क्या है? It's a what? Percentage ionic character in a covalent compound. Just like you may see here that there is something called as an HF. Okay. There is something called as what? An HF. Right? Okay.
So how is this HF bond? HF bond, fluorine is having partial negative charge, hydrogen having partial positive. And how is this charge? This charge is polar in nature. Correct. Charge कैसा है? Charge is polar. है ना? Polar bear. Polar bear की बात नहीं कर रहा हूँ. Whereas you see H and H, there is no electronegativity difference. Electronegativity क्या है? हमने periodic table में देखा है. HF में क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसलिए क्या है कैसे चार्ज है पोलर है, लेकिन HH में क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है. दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट दिस इज नॉन पोलर. इसमें कोई भी तरीके का पोलैरिटी नहीं है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है. समझ में आई मेरी बात. एंड डाइपोल मोमेंट फॉर इंफॉर्मेशन इज व्हाट dipole moment is what, my dear students, what is dipole moment? For all of your information, dipole moment is what? Dipole moment is in vector quantity. Okay, correct. Dipole moment क्या है? Dipole moment एक vector quantity है. ठीक है, लिख लो इसको फटाफट से. Dipole moment क्या है? एक vector quantity है. तो dipole moment बेसिकली किस चीज के बारे में बताते हैं कि dipole moment tells about polar and non-polar. Polar and non-polar. Right? Dipole moment tells about whether my compound is polar or it is non-polar. कौन बता रहा है ये? डाइपोल मोमेंट हमको बता रहा है अपना कंपाउंड जो है बच्चों क्या है, पोलर है या नॉन पोलर. जैसे अपना BF3 होगा, BF3 के बीच में कितना एंगल है? 120 डिग्री है ना. तो क्या करता है ये, फ्लोरीन इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा. खींच खींच के क्या करता है? एवरीवन इज पुलिंग. So if I draw like this, this is on the top, but this is what, इसको यदि मैं इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना है मुझे, तो कैसा आएगा ये? If I have to project it down, how it will come? एक वाला तो क्या आएगा? cos 60 आएगा या sin 60 आएगा बताओ? If I want to project it in this direction, cos 60 आएगा या क्या आएगा? मान लो डाइपोल मोमेंट यहाँ पर कितना है? म्यू है. ओके, यहाँ पर म्यू है, यहाँ पर म्यू है और यहाँ पर म्यू. इसको इधर प्रोजेक्ट करेंगे कितना आएगा? ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री है. करेक्ट. तो इसको यहाँ पर प्रोजेक्ट करें तो कितना आना चाहिए बताओ? आप लोग मैथमेटिक्स में बहुत होशियार लोग, मुझे आपसे सुनना है, कितना आना चाहिए बताओ? यस इरिश, टेल मी हाउ मच दिस विल कम. will it be cos 60 or will sin 60? बोलो. वेरी सिंपल क्वेश्चन आस्क, कुछ भी नहीं करना. will it sin 60 or will cos 60? Yes, tell me quickly. Yes, wish. Sorry, sir. तो बताओ भाई कुछ तो.
म्यू cos 60 है या म्यू sin 60 है? Just tell me quickly, is it म्यू cos 60 or म्यू sin 60? नहीं, कैसे होगा हम लोग का बच्चों? यस मिसेस तनीषा, बताओ, ये म्यू cos 60 होना चाहिए, म्यू sin 60 होना चाहिए? No, रुद्राक्ष, टेल मी, अनम्यूट योरसेल्फ। ये क्वेश्चन आपने वेक्टर क्वांटिटी फिजिक्स में भी पढ़ा है, लेकिन इसमें कुछ है नहीं बड़ा चीज, राइट? रुद्राक्ष, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। क्या होना चाहिए बताइए? म्यू cos 60 होना चाहिए, म्यू sin 60 होना चाहिए? सर किसका? ये म्यू इधर है ना, ये सपोज दिस डायपोल मोमेंट इज कॉल्ड एज म्यू, और इस वेक्टर को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, है ना? आपने किया होगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में ऐसे। When I'm writing this here, तो इसका क्वांटिटी कितना होगा यहाँ पर, कैसे बताओगे? म्यू cos 60 होगा या म्यू sin 60 होगा? It should be cos 60. cos 60. What is value of cos 60? √3/2. √3/2. sin 60 क्यों नहीं होगा? Why is it not sin 60? इधर आएगा तो sin 60 होना चाहिए ना, है कि नहीं? राइट, ओके। It would be how much? Mu sin sin 60 का वैल्यू कितना है? वेट वेट, कुछ तो गड़बड़ है। ओके, यस, यू टेल। यस, ओके, रिया, यू टेल। कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ, मिसेस रिया? Yes, sir. How much is value of cos 60? Sir, cos 60 value is half. Yeah, very good. क्या 16? And sin 60 is how much? √3/2. Yes, very good. तो ये कितना होगा यहाँ पर? ये दिस विल बी म्यू cos 60, और ये दूसरा वाला, इसको भी यदि मैं 60 डिग्री पे करूँ, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है? 120 डिग्री का। This also is 60 degree. How much is it become? This second one will also be mu cos 60. And if you take, how much this comes out? Mu cos 60 plus mu cos 60. How much will be this value? Mu/2 plus mu/2. How much is this? This is mu only, correct? So in a sense, how much is the net value downwards? Downwards is mu, correct? How much is net value upwards? Upwards is mu, downwards is mu. So mu and mu gets cancelled. That's why what I can say that this compound is what? This is non-polar, because the dipole moments are getting what? Cancelled from top and bottom, right? So this is the thing. Got it? Got my point? What I want to tell you. Clear? Any doubt here? Anyone has? Let me know. So basically, dipole moment what tells कि अपना compound polar है या it is what? Polarity unpolar है, बस इतना बता रहा हूँ. Yes, Rudraksh, that's what I told that कि डायपोल मोमेंट सबसे पहले आपको समझना है वो क्या है. एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसका डायरेक्शन है. तो ये जो बी और एफ का ऊपर वाला बॉन्ड है, जिसमें एफ क्या कर रहा है? बी से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है, ऊपर की दिशा में. और वो दो एफ जो है जा रहे हैं, वो बी के एंगल में कितना है वो ना? बोथ दिस एफ जो भी है, ये वाले अपने एफ, ये वाला एफ और ये वाले, इसके बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री. लेकिन मुझे क्या करना है? नेट निकालना है, नेट डायपोल मोमेंट. तो कैसे निकालूंगा मैं? एक तो ऊपर वाला तो है ही अपना. अब मुझे क्या करना है?
नेट निकालना मतलब क्या, नीचे देखना पड़ेगा, इसके एग्जैक्ट नीचे। तो क्या थे अपने पास, ये वाले दो वैल्यूज थे ना अपने पास, है ना, राइट। अलग कलर ले लेते, आई हैड दिस वैल्यू ऑफ म्यू। अब यहाँ पर भी क्या था, म्यू, ये भी म्यू है, ये भी म्यू है ना। डायपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल म्यू। और इसको मुझे क्या है, नीचे की तरफ देते हो, सो दैट आई विल गेट इट्स एक्चुअल क्वांटिटी। इस डायरेक्शन में तो ये म्यू है, लेकिन नीचे के डायरेक्शन में कितना रहेगा, ये म्यू बाई 2 आधा ही रहेगा उसका। और ये भी म्यू है, इस डायरेक्शन में कितना रहेगा, ये भी कितना रहेगा, म्यू बाई 2। So what I did is that I added them mu by 2, mu by 2 is equal to mu. So upward it is mu and downward it's mu, correct? So upward mu, downward mu, which gets cancelled. That means that this compound is what? In a sense, this compound is completely polar or non-polar. Yes, tell me. It's non-polar because there is no direction. समझे कि नहीं अभी बताओ? Now you understood or no? Yes, Rudraksh. Rudraksh, समझे कि नहीं बताओ? सर नॉन पोलर क्यों हुआ है सर, उसका रीजन नहीं समझा। वही तो बोल रहा हूँ मैं, नॉन पोलर क्यों हुआ, क्योंकि उसका पोलैरिटी कैंसिल आउट हो रहा है। मतलब मान लो तुम बीच में खड़े हो, ठीक है, तुम बीच में खड़े हो, एक आदमी तुमको, है ना, मीत तुमको उधर खींच रहा है, पीयूष इधर खींच रहा है, और कौन खींचेगा, और अस्मित चौहान पे चले जाए, अस्मित चौहान पे चले जाए, तो खींचने वाला तो नहीं है, ठीक है। मान लो अस्मित चौहान तुमको खींच रहा है, और तीनों कैसे करे तुमसे 120 डिग्री एंगल पे खड़े, और दोनों का वेट कितना है, दोनों का वेट है, राइट, ऑल आर हैविंग इक्वल वेट ऑफ 60 60 60, है ना। तो ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, और वो उधर खींच रहा है, राइट। सब लोग अपने अपने एंगल से, है ना? तो क्या होगा, तो नेट तुम्हारा पुल किधर होगा, your net pull will be nowhere, you will be there only if they all are pulling with equal intensity and all are having the same weight. Non-polar in the sense कि, correct, ना, bromine is having no pull anywhere, ऊपर भी उतना ही पुल हो रहा है, नीचे भी उतना पुल हो रहा है, मतलब उसका पोजीशन उधर, उसके इलेक्ट्रॉन्स कहीं नहीं जा रहे, उधर ही दे रहे, समझ में आ रहा है। whereas you see NH3 and NH3 इलेक्ट्रॉन का ये पोजीशन है, कहीं तो खींचे जा रहा है, क्योंकि डाउनवर्ड पुल और अपवर्ड पुल बैलेंस नहीं है। इसमें क्या है, BF3 में डाउनवर्ड पुल और अपवर्ड पुल क्या है, ये बैलेंस है, ओके। समझिएगा रुद्राक्ष? यस सर। ओके, नाउ हाउ टू राइट डायरेक्शन इफ आई हैव HF, करेक्ट। How is my direction? Direction of my this quantity is always there in the more electronegative part. यहाँ पर more electronegative का मतलब है, let's write here that less electronegative to more electronegative part में जाता है, right? And this is specifically if it's a compound. Right, and most importantly, if I have an atom, right, and if it's a lone pair, right, where it would be the direction? Direction will be something like this, right? Atom to lone pair, मतलब lone pair की direction में जाता है, atom to lone pair की direction में जाता है। And just write down first. If you haven't doubt, let me. If doubt रहेगा तो मुझे बता, लिख लो फटाफट।
Write down fast. वगैरह लिख के सकता हूँ. Yes, done writing. Please go ahead. मैं आपको देता हूँ अभी CO2 देता हूँ एग्जांपल. Give some time to tell me how much it requires. Right? मतलब इसका क्या है डायपोल मोमेंट क्या है वो आपको बताऊँ. जल्दी जल्दी बताऊँ. How much is its net dipole moment? It's very easy. Nothing to accept. Think or do. Correct, huh? Tell me quickly.
आगे किसी का कुछ तो बताओ, समझे नहीं समझे? समथिंग एटलीस्ट यू शुड रिप्लाई, करेक्ट ना? हो गया कि नहीं किसी का? अरे स्वरूप तो अभी आ रहा है लेक्चर में। मुझे लगता है वो पहला वाला चला गया अपना। पहला वाला सेव होता है क्या? गया वो अपना। ओके ठीक है, तो बच्चों एक पार्ट हमारा चला गया है, नोट्स कैसे मिलेंगे उसके? ठीक है देखते हैं। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, आपको क्या चाहिए, क्या लेना है आपको? एग्जाम्पल तो आपको सीओबी, ठीक है। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर निकाल के देखता हूँ। अब तो बताओ क्या है इसका टाइप, बहुत आसान है, स्ट्रक्चर भी दे दिया मैंने आपको ना। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर भी दे दिया। अब तो बताओ क्या आएगा इसका? देखो कुछ ऐसा आएगा। Yeah, very good, Josh. Non-polar. Why? Because oxygen is pulling this side, and this is pulling this side. Correct. So what is basically mu net is equal to how much? Mu net is equal to 0. Correct. है ना? So what I can say that bond moment is there. Bond मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है. Right. Bond moment is there. है ना? But no dipole moment. Bond moment हो है लेकिन dipole moment कुछ भी नहीं है इसमें। मुझे मेरी बात है, dipole moment तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत एक एग्जांपल दिया जाए आपको। ठीक है, SO3 का करके बताओ मुझे जरा। SO3 का करके बताओ क्या आ सकता है इसमें। सोचो थोड़ा सा, SO3 का स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, क्या आ सकता है इसमें। मैं बताने वाला हूँ वैसे, लेकिन आप थोड़ा सोचो इस पे।
ठीक है बच्चों, बहुत टाइम आपको दे दिया हमने। देखो SO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? SO3 something like this, and this would also be something like this. Correct. O is more electronegative than sulfur. Correct ना? तो ये ऐसा पुल होता रहेगा यहाँ पर. Correct. And this is same as BF3 जो हमने देखा था. Correct. Right. One mu on top, another mu at the bottom. With mu cos 60, and mu cos 60. Correct. How much this is? This becomes mu, and this also becomes mu. Correct. So net is how much? Net dipole moment means mu net is equal to 0. Correct. Therefore, it is what? This is non-polar in nature. Correct. Therefore, this is what? This is non-polar in nature. Okay. Right. Now let's talk in terms of diatomic molecules. Correct. Now let's talk in terms of what? Of diatomic molecules. Okay. Diatomic molecules. डायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब ये मान लो अभी आपके पास है H2 Cl2 है ना Br2, इसमें क्या होगा सब में? इन सब में म्यू इज गोइंग टू बी 0 ओनली बच्चों. क्यों? क्योंकि कुछ है ही नहीं ना इसमें. That's why these are what? These are non-polar. There is nothing to think as such. Therefore, it's going to be non-polar in nature, right? And then, if I talk in terms of your right. Correct. If I talk in terms of HF, HCl, HBr, HNK, they are also diatomic, but their mu net is not equal to 0. That means what? They are all polar in nature. सब क्या है? Polar in nature. And which is more polar? Suppose if I number it out. 1, 2, 3, 4. Okay. 1 is right more polar than 2, more polar than 3, more polar than the fourth one. Right? How you come to know? How you come to know? Very simple. Just see the polarity and go ahead. Correct. Who is more electronic? Chlorine is more electronic than chlorine. Right. Correct. Huh? That's how it happens. Okay. Right. So it all depends on the charge. And then formula also for dipole moment. What is that? First of all, dipole moment is represented by mu, and there's a formula also. Mu is equal to what? Q into D. Correct. Q into D means what? Q means what? Q is your charge or any atom. And D is what? D is your intermolecular distance. D is what? Intermolecular distance. D is what? Intermolecular distance. Charge is how much? Mu is equal to Q into D. Correct? Mu can Q into D. And what do you find out here? You found out the charge. Correct? तो चार्ज सब में, इन सब में किस में ज्यादा है चार्ज? चार्ज किस में ज्यादा है? फ्लोरीन, then chlorine, then bromine, and then iodine. Correct? And fluorine has the maximum charge, though it's maximum electronegative. And distance किसका ज्यादा है यहाँ पर? Distance है fourth का ज्यादा है, third से, फिर second से और first. So if you see this formula, charge into distance, and if I rub this out, correct?
And what if I do is, if I write it as like this, charge is more in 1, then 2, then 3, and then 4. Now how it would be? देखो यहाँ पर क्या है, चार्ज उल्टा है, और यहाँ but the formula is charge into distance ना, करेक्ट ना. HI is more having more size because iodine का size बहुत बड़ा है, इसलिए वो क्या है, उसका distance भी बड़ा हो जाता है ना. So what is happening is that 1, 2, 3 and 4, 4, 3, 1, correct. But priority दोनों में से किसको देना है ज्यादा? Okay, always we should take decision based on the charge. Yes or no? Always take decision based on the charge, correct? Correct. Always take decision based on charge. तो चार्ज के ऊपर आपको डिटरमाइन करना, लिख लो इसको फटाफट जल्दी जल्दी, राइट इट डाउन फास्ट.
Okay. So is what we are discussing now. We are discussing about the polyatomic atoms. अभी तो monoatomic देख लिया हमने, एक ही atom, एक monoatomic or homoatomic basically. The same time. Now for this one, what will happen? It will be something like this: BaCl, yeah, Cl something like this: OCO, correct? HC, triple bond C, H. All are what? All are linear, correct? All would be get cancelled, correct? सब लोग cancel हो जाएंगे एक दूसरे से. कैसे cancel होंगे? ये इधर जाएगा, this will come cancel. ये इधर cancel. ये इधर और ये इधर cancel. सब में क्या है? Mu net is equal to 0, correct? And the speciality of polyatomic is that what they are symmetric in nature. Okay. Symmetric in nature, and what happens is that the surrounding atoms are same. Surrounding atoms are same. Correct. Then what happens? Then mu net is 0. Right. Then mu net is 0. And if you want to see now third of the kind of AB3, just like we saw example for BF3, SO3. Right. This example already we saw. BBR3. What happens? BF3 का हमने तो already देखा है. Right. Now what will happen here? This will take here, this will take here, and this will go here. So आपका क्या है? Mu net is equal to 0 हो जाता है, क्योंकि इसको कैलकुलेशन में ऑलरेडी देखा. It becomes 60. Right? Mu cos 60, mu cos plus mu cos 60 is mu only. So mu net is what? 0. And now if I want to talk about SO2, what will be? SO2 structure is something like this. Correct. Now that means for this mu is what? Mu is not equal to 0. Why? Because here not O is not there. And SO2 is polar in nature. But whereas SO3 हमने जो पहले देखा था वो क्या है? Non-polar है. Correct. So 90% of the cases when there is lone pair, the case atom is what? Or the molecule is what? It is non-polar. Like that. Okay.